Okay, so very good afternoon, everyone. So we are Good, going good, to af- good start. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. We are going to start the one of the most next important, one of the important chapter, especially whatever the chapter we are learning now. These all are based on the history part. History part means what you know. In this, we will learn some of the important historical things. Okay, and this unit 6, chapter number 14 is the public property. So first most important thing is the public. What the public means. Everyone aware about this public? The term public means Yes, what? sir. Which people are known as public? Am I a public? We a public? हम लोग सभी public है या नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So the people, whoever live in a particular society or a particular place, those are known as the public, right? And then property means what? What does the property mean? Property Sir. means actually something means it may be school, it may be bus, it may be hospital, it may be a bank, it may be some universities, it may be police stations. So there are lots of things. It may be libraries, it may be church. So there are lots of places it may be which are called which are known as the property. ये एक जमीन भी हो सकता है. It may be the land also. And after then it may be particular thing, कोई चीज हो सकता है, or it may be particular this type of things as like bank, hospitals, schools. So these all things are known as the properties. Okay, so what we will learn in this chapter is first most important thing is the meaning of public property. What does the public property means? And then we'll see what the parks and some Sir, specific. Yes. the property means sampatti. Yes, Sampatti. In Hindi, it is called Sampatti. Very nice. So after then, we will learn about the parks also, parks and some monuments, and then we will see some means of public transport and public libraries. Okay. So one of the most important thing is the transport in today's time, because if we want to go somewhere, who is this? Moto GS. Why you are writing? Sir Ravis. Sir Rabi. Ravis. Sir Ravis. Okay, so about the transport we will learn. Okay, what are the means of transport, and then some public libraries we will learn about, and how to take care of the public property. Sometime you all might all have seen in our school also. Okay, before that, some of the word meaning also related to this chapter which we have. So let us discuss some word meaning first, because during the class it will help us. Okay, so first word which we have is affordable. So this we will pronounce as affordable. So affordable means सस्ता चीज जो होता है, cheap to buy. I means which we can afford. ओके हम लोग जिसको खरीद सकते हैं, ठीक है, या हम लोग जिसको पे कर सकते हैं. मतलब क्या होता है ना कि नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रैवल विथ ए कार और टू ट्रैवल विथ ए फ्लाइट. तो अगर मान लो हमको यहाँ से कहीं और जाना है, कुछ एक दिल्ली जाना है या मेरा झारखंड जाना है, so it is not possible every time to go with own vehicles as like car, or it is not possible to go every time with the flight. So what is the thing is we can go with a cheap things, that is the rails, right? Transports rails. So दिस इज द चीपेस्ट वे. दिस ये सस्ती चीज, सस्ता में आ जाता है, कम पैसा में कम खर्चा में हम लोग पहुंचते हैं. सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड अफोर्डेबल. ठीक है. आफ्टर देन विच वी हैव इज डिफेस्ड. सो डिफेस्ड मींस समथिंग डैमेज. कभी कभी आप लोग देखना कुछ स्टूडेंट्स है जो स्कूल्स के दौरान जो है बेंच में कुछ प्ले करते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं, वहां से स्टिक्स निकालते रहते हैं, या कुछ वॉल में लिखते रहते हैं, या वॉल को डैमेज करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स, कोई चीज को जब हम लोग बिगाड़ते हैं या बिगड़ा हुआ चीज जो होता है, दैट इज कॉल्ड डिफेस्ड. ओके.
हाँ, after then which we have is fares. So fares means everyone know कि हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो पैसा किराया पे करते हैं, एज लाइक ऑटो से हमको यहाँ से जाना है सूरजगढ़, तो क्या करेंगे, हमें फेयर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा. So that is known as fares. Okay. Put on mute. जिसको भी कुछ नहीं बोलना है, keep on mute. जब आपसे कुछ पूछा जाएगा या कुछ बताओगे तभी unmute करोगे, because the noise is coming from your side. Okay. So after fares it is coming the maintenance. So maintenance means what? कि कोई चीज का रख रखाव करना, कीपिंग समथिंग इन ए गुड कंडीशंस. क्या होता है कि नॉर्मली वी यूज टू, इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ समथिंग, कोई चीज का अगर अच्छे से हम लोग रख रखाव नहीं करेंगे, सो दैट बिकम डैमेज, वो डैमेज हो सकता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मतलब हम लोग को उसको गुड कंडीशन में रखना, अच्छी कंडीशन में मेंटेन रखना. ओके. आफ्टर देन ऑर्डरली मींस एवरीवन नोस, सो प्रॉपर इन कीपिंग इन प्रॉपर वे, प्रॉपर ऑर्डर. सो व्यवस्थित रखने को ऑर्डर बोला जाता है. After then property, everyone is aware about the property also, a thing or things which belongs to somebody. कोई एक पर्टिकुलर आदमी या गवर्नमेंट के उसके ये में जो जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी. इसको हिंदी में संपत्ति बोला जाता है. ओन्ड मींस अपना प्रॉपर्टी कुछ जो होता है, ठीक है. टू हैव समथिंग बिलोंग्स टू पर्सनल, योर्स और टू आवर्स, टू माई. So that is called the owned. And then we have monuments. So monuments we have learned in our previous chapter also. So it is all about the old buildings or a particular place which has some importance, historical importance. कुछ यादगार चीज जो होता है, that is called the monuments, right? So these are the some word meaning which we have in this chapter. Except that, if any else word meaning you find or you don't know, you can ask anytime. We will discuss. Okay. After then, these are the some things which if you see around us, you can see sometimes, especially you will able to see in government schools or like that, or some buildings, old buildings. इस तरह से कुछ टूटा फूटा चेयर्स वगैरह होगा, एंड देन यू विल सी द वॉल्स लाइक दिस. इस तरह से वॉल्स डैमेज हो जाता है, इस तरह से डैमेज कुछ चेयर्स एंड टेबल्स हो जाता है. So these are the some defected things. Okay. So these are the some defected things which we can see around us. So these all things you might also have seen in some of the schools, some in schools where, or somewhere in the schools, in old schools furnitures like this. So these all are the things which are damaged. So these things are called damaged things. So can now you all tell me any three ways which can through which we can stop these all things. कोई भी हमें कोई 3 तरीका बता सकते हैं जिससे हम लोग ये डिफेक्शन जो है, दिस डिफेक्ट वी कैन स्टॉप और वी कैन मिनिमाइज, ताकि हम लोग का ये चीज इस तरह से डिफेक्ट ना हो. हाउ कैन वी मिनिमाइज इट? कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? How can we minimize this type of defect? Recycling, reuse. No, those are the things which we have learned in our previous chapter, but here you have to take care about the properties. It may be public or private. जो भी properties है इसके आपको इसका ख्याल रखना है. कैसे ख्याल रखना है? जैसे कि if you are coming to the school and school walls, you should not write anything in the walls. Okay. Then you should not break down the school furnitures. आपको स्कूल फर्नीचर का टेक केयर करके रखना है. और डस्टबिन में ही कोई भी चीज आप जो भी प्रोडक्ट्स होता है यहाँ तहाँ नहीं फैलना है. You should not throw here and there any dust things. You have to just keep all the things in dustbin only. Okay, so these all are the some more ways are there through which you can take care of the public properties. And what the property is, now we have already learned that a things or some things which belong to somebody is called the properties. Okay, it may be parks, it may be hospitals, it may be roads, it may be railway stations. These all are the public properties only, with the examples of what we have given here. Okay. After then, something about the public property is some highlighted thing or some pointers which we should learn as first most important thing. What the public property is? A public property is a space that is open for all the public. So you can also use, I can also use, whoever want they can use, right? But the most important thing is how
द पब्लिक प्रॉपर्टीज आर मेंटेन, कैसे उसको मेंटेन रखा जाता है, कैसे उसको बिल्ड किया जाता है और कैसे उसको मतलब मैनेज किया जाता है. सो दिस स्पेस इज स्पेशली ओन्ड बाय नो वन पर्सन, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्सन से बिलोंग नहीं करता है ये प्रॉपर्टी जो भी होता है, ठीक है. एज लाइक लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में क्या है कि आप एक पर्टिकुलर फीस देके वहां पे जाके यू कैन ऑल्सो रीड द बुक्स, राइट. एंड दे आर स्पेशली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा लिया हुआ रहता है. इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया जाता है, इसको बिल्ड किया जाता है. आफ्टर देन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा गया है पार्क. पार्क में क्या होता है, एवरीवन यूज्ड टू गो देयर फॉर द एक्सरसाइज, फॉर द योगा, for talking also something, for discussing something, they used to go in the evening times. So these are also the public properties, right? Some monuments we used to visit there, and then beaches or public transport. So these all are the some of the examples which it is shown in the about the public properties. Understood what the public property is, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Only two. Yes, Loudly. sir. Okay, very nice. So this is all about the public property. अगर public property के बारे में पूछता है, if you have you just write these all 3 pointers with the examples, that's enough. Okay, understood? With Yes, examples sir. we have discussed. Now, now next first public property which we will discuss about the parks, right? So public and private property में difference क्या है? What is the difference between public and private property? Is public property is belong to the public, all public. It is open for all. But private property is especially belongs to a particular person. Okay, that is maintained and managed by the particular persons. And but public property is open for all the public only. Okay, as like parks. So here you can see in parks, स्पेशली द व्हाट टाइप्स ऑफ एरिया इज द पार्क इज ए ग्रेसी एरिया. सो पार्क में आप कभी भी जाते हो तो देखोगे वहां पे ग्रास होता है, घास का जो है पूरा ग्रेसी एरिया रहता है. एंड देन यू विल सी द सेवरल प्लांट्स आल्सो, इट मे बी फ्लावर प्लांट्स एंड मे बी बिग प्लांट्स आल्सो. So why the plants are there? Because this make the parks shaded. वहाँ पे shade रहता है और shade में बैठ के हम लोग जो भी activities है वो करते हैं. So children can play there. Okay, people can exercise there. Then people can practice yoga there. So people can walk there, and then we can chat with with our friends also. So these are the activities which we can do in a particular park. Okay. So you understood what the park is. You understood what we used to do in our park, right? Park होता क्या है? Park में हम लोग क्या क्या करते हैं ये आपको समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Okay, so who can tell me what are the activities we can do in park? So we can play, Very we can nice. exercise, yoga, Okay. we can walk, we can chat with friends. Very nice, Dhananjay. Except Dhananjay, anyone else can tell me what we can do in the parks? Sir, we can enjoy the swings. Okay, very nice. We can walk also. Sir, Dhananjay told it. We can talk in phone also. We can listen music also. Can we eat? We Yes, can eat sir. also. We can. We already some of the people used to go there for the picnics also, right? तो हम लोग picnic. Yes, sir. जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो और क्या क्या कर सकते हैं? Tell me. We can play football. Sir, we. Yes, sir, we can play Yes, we can. games. Yes. Yes, we can play So chess we also. can play games. We can play indoor games also there. Carom board also we can play. Right? So we can play outdoor games also. Yes, outdoor game as like badminton. Right? So we can. What else which we can do which it is not here? We can take pictures also, especially selfie. Yes. Right? We can make videos. We can make videos also. Right? Very nice. Anything else? Anyone thinking? Sir, we can sleep. Sir, we can sleep. We can sit also. We can sleep also. Or Sleep. not? Can we sleep or not? Sir, we can sleep. Okay, Sir, we can sleep. we can dance also. can sleep for a few times only, for not a whole night, right?
Yes. So these are Sir, the we things. can plant the trees. Yes, very nice. We can plant the trees or flowers also, है ना? So very Yes. interesting things. We can do this also. So this like this, you have to think beyond the books also. Sometimes this it is not necessary everything will be in your book. So you have to think what we can do and what the basically is. Now some important facts about the uh, parks is our national parks, right? In national parks, what happens? We can find a large variety of birds, animals, and vegetation. Vegetation का मतलब क्या होता है? All the plants that are found in a particular place. तो एक जगह होता है जहां पे आप देखोगे कोई एक पर्टिकुलर आप जाओगे कोई एक पर्टिकुलर पार्क में तो एक स्पेसिफिक पेड़ जो है वो ज्यादा दिखता है आपको, राइट? विशेष सब तरह के वनस्पति वनस्पति जिसको बोला क्षेत्र जाता है। विशेष में उगने वाले सब प्रकार हाँ, के पौधे। हाँ, तो इसको बोला जाता है वेजिटेशन, ठीक है? सो ये जो है हमारे इंटरनेशनल पार्क्स में हुआ करता है। अभी नॉर्मली आप लोग जो छोटा मोटा अगर पार्क्स विजिट किए हो तो यू विल नॉट एबल टू सी दिस ऑल थिंग्स। अगर हो सकता है वीडियोस में आप देखे होंगे तो वहाँ पे एनिमल्स मिलता है, बर्ड्स मिलता है, एक अच्छा अच्छा अलग अलग वैरायटी का बर्ड्स दिखाए आपको देखने को मिलेगा, एनिमल्स रहता है, देन अलग अलग पेड़ रहता है, ठीक है? तो ये जो होता है ये इंटरनेशनल पार्क्स में होता है, ठीक है? सो हाउ मेनी इंटरनेशनल पार्क्स वी हैव इन आवर इंडिया? There are 103 international 103। parks and 50 tiger 103। reserves in India. Tiger reserves क्या होता है? Especially tiger reserve means the things which we keep for a specific reason. क्योंकि अभी क्या होता है ना, आप देखोगे टाइगर जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में काफी पहले काफी हुआ करता था, जो कि अभी घट जा रहा है दिन ब दिन। तो उसको हम लोग सेफ फ्यूचर के लिए उसको सेफ रखने के लिए हम लोग टाइगर रिजर्व बना दिए हैं, विच वी हैव 50 टोटल, ओके? सो एज लाइक यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व, कुछ नेशनल पार्क्स का एग्जांपल दिया गया है। टॉप 10 जो नेशनल पार्क्स आता है वो यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे कन्हा नेशनल पार्क है, देन बंद बंदरगाह नेशनल पार्क है, देन खांजीरगंज कन्हा नेशनल पार्क है, देन नागरहोल नेशनल पार्क है, रविंद्रनाथ क्या नाम है, रणथंभौर नेशनल पार्क। सो दीज आर द सम, सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ठीक है? So these are the some national parks which it is given. So these are something special, or these are something additional from the books which we don't have in our book, but you should know these all things, right? Because you are learning about the parks, so you should learn about the national parks also, right? Now after parks, which we have is the monuments. So monuments means we already know are the especially some buildings which are built in the memory of some specific persons or some specific event, right? As like India Gate. So India Gate is one of the monuments which we have. Hawa Mahal. This is also one of the most important monuments which we have. Then Buland Darwaja. This is also one of the monuments which we have. So these are the some examples of famous monuments in our India. So here one word is used, elaborate, okay? So elaborate. So monuments are elaborate buildings. So what does elaborate means? Elaborate means to made very carefully, बहुत ही मतलब अच्छे से उसको केयर करके बनाया जाने वाला चीज को एलोबरेट बोला जाता है। तो एलोबरेट बिल्डिंग्स विच आर बिल्ड फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। कुछ इवेंट मतलब कुछ इंसिडेंट हो गया, जैसे कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को याद रखने के लिए हम लोग एक कोई चीज बना देते हैं, ठीक है? ताकि उसको देख के आदमी याद रखे कि दिस इज द थिंग विच हैपेंस एट दैट टाइम वी हैव मेड दिस। आप लोग याद आप लोग को पता होगा कि देखना कभी कभी किसी का बर्थ पे या किसी का जब एक्सपायर हो जाते हैं कोई, तो ट्रीज लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है उसका याद में कि ये जब जन्म लिए थे तो आपका ये इस दिन हमने ये ट्रीज प्लांट किया था तो आज ये इतना बड़ा हो गया। तो दीज आर कॉल्ड द एलोबरेट, ओके? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? विच फिगर इज दिस? India Gate. इंडिया गेट। Anyone else? इंडिया गेट। इंडिया गेट। Okay, very nice. This is India Gate. So can anyone tell me what the special thing about India Gate? क्या है इसमें, क्या है? What is the importance of India Gate? किस लिए ये बनाया गया था या किस ये पे ये बनाया गया था? Anyone, whatever you know, जो भी आपको पता है, अगर पता है तो।
वर्ल्ड वॉर के बारे में आप लोग सुने हो? वर्ल्ड वॉर। World War. सो ये जो है ना, ये स्पेशली तब बनाया गया था जब हमारे वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उस समय काफी लोग जो है ना, काफी हमारे सैनिक जो है वो मर गए थे, इंजर्ड हुए थे और मर भी गए थे। उसके याद में जो है ये बनाया गया था, जो कि हमारे दिल्ली में ये है। ठीक है, दिस इज लोकेटेड दिल्ली। ओके, एंड दिस इज आल्सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड किंग्स वे। सो इसको किंग्स वे भी बोला जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स और स्टैच्यू विच वी हैव। ओके, एंड दिस इज स्पेशली विक्ट्री टू कोमेमोरेट दोज हु डाइड, जो मर गए थे हमारे उसमें वर्ल्ड वॉर में के टाइम। ठीक है, so commemorate, does this commemorate means exist or take place in order to make people remember a special event। तो मनाने के लिए जो हम लोग कोई चीज मनाते हैं ना, that is called commemorate। yes, someone saying something। सर इसका हाइट कितना होगा? the height of the India gate is I think 52 or 42, 52 something is there। सर 42. 42, हाँ 42 meter I think। let me see once। anyone is aware about the height of India gate? Yes sir, 42 meter. Yes, 42 meter, definitely 42 meter is the height of India gate। okay, very nice। what this place is, can anyone tell me? हवा महल. Hawa Huh? Mahal. हवा Yes. महल. Yes, very nice। what is the importance of this? why this is known as Hawa Mahal? सर इसके अंदर बहुत सारा कमरा है. बहुत सारा कमरा है। कमरा के चलते तो तब तो वो कमरा महल होना चाहिए था, हवा महल कैसे नाम है? तो हवा महल क्यों नाम है? anyone have any idea why the name of this पास mahal is कटा Hawa हुआ है Mahal? इसलिए। yes, exactly, हवा पास का। It looks like it is flying. नहीं, हवा पास तो घर में भी करता है, तो हम लोग का घर भी हवा महल है। इसमें एक्चुअली सबसे ज्यादा हवा पास करने के लिए स्पेस दिया गया है, विंडोज दिया गया है। यहाँ पे जो है ना, आप ये देख रहे हो ना, छोटा छोटा ये जो प्लेस है, दीज ऑल आर द विंडोज। ये विंडोज बनाया हुआ है। इसमें टोटल कितना विंडोज है? 953 विंडोज है। ठीक है, आप समझ सकते हो, करीब 950 विंडोज है। 953। यस, इतना सारा विंडोज है ये। सो दीज ऑल आर द विंडोज। तो ये विंडो इसलिए है ताकि उसमें एयर पास हो सकता है इस प्लेस में, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हवा महल। ये हमारे जयपुर में है, इंडिया का जयपुर सिटी में। ठीक है, एंड दिस इज स्पेशली आल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली ओनली। ओके, एंड दिस इज बिल्ड विद द पिंक सैंडस्टोन। ये भी रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। ठीक है, दिस मीन्स द प्लेस ऑफ वाइन्स, क्योंकि यहाँ पे वाइन्स जो है जितने भी विंडोज है इसके थ्रू पास होता है, और इसलिए इसको बोला जाता है हवा महल। तो आज हम लोग इसी हवा सर महल, झरोखा मींस? झरोखा मीन्स वो होता है जो विंडो होता है ना, उसी को हिंदी में झरोखा बोला जाता है। अच्छा, हाँ। तो हम लोग आज इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अबाउट द monuments of our India, especially up to the monuments of the India. Rest of all about the public transport and public library and how to take care of the school and public property, we will learn about that. Okay. Okay, one more monuments which we have, this one. Can anyone tell me what is this? बुलंद दरवाजा। जामा मस्जिद। सर बुलंद दरवाजा। Yes, सर exactly. बुलंद दरवाजा। Exactly, this is Buland Darwaja. So look like masjid, why? Because this is the masjid only, ये एक मस्जिद ही है स्पेशली, इसीलिए मस्जिद जैसा दिख रहा है। एंड स्पेशलिटी ऑफ दिस इज द स्पेशली द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट गेट, इंडिया गेट। ये सारे जो भी है ना, गेटवे ऑफ इंडिया ही है, मतलब इंडिया में एंटर करने के लिए जो एक मेन गेट होता है वो है। ठीक है, तो इसका जो हाइट है ये टोटल 54 मीटर है, एंड ग्राउंड लेवल से। दैट इज व्हाई दिस इज द लार्जेस्ट, आई मीन हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, विश्व का जो है
सबसे हाईएस्ट गेटवे है, ठीक है, जो कि मुगल आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया था। एंड दिस वाज बिल्ड इन 1602 एडी, मतलब 1602 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है। अकबर का कोमेमोरेट के द्वारा बनाया गया था। जब अकबर ने गुजरात पे जो है विजय प्राप्त किए थे, एट दैट टाइम इट वाज मेड। और ये जो है जमा मस्जिद में एंटर करने के लिए जो मैन गेट होता है वो है, ठीक है। एंड ये हमारा आगरा में है, इंडिया का जो आगरा लोकेशन है। अंडरस्टूड? So these are the some of the historical monuments which we have, especially these three things which we have in our syllabus: India Gate, Hawa Mahal, and then Buland Darwaja. After then, rest of all we will discuss in our next class. Thank you, everyone. In your homework, you can just go through the topics which we have learned today. You can search about these all monuments, about the international parks, about the national parks, and about the some of the monuments of our India. And you have to just go through and read about this. You can watch the videos related to that. You can search in Google also. You can read through the books also. Okay. Thank you, everyone. Have a good time. Take care and bye bye.